Having understood what is purpose of a business and that is to create value, let us now understand as to what strategy should a business deploy for realizing creation of this value. So we understand number one, and that is purpose. So purpose of a business is to create value. Value creation is the purpose of any business anywhere in the world. Now, what are the prerequisites? What are the prerequisites for the business to create value? The prerequisites for business to create value are number one is the profit. So if you want to create value in the business, you obviously have to make profit. And please remember, not only you have to make profit, but you also have to grow. So no business anywhere in the world will ever start, or no businessman anywhere in the world will ever start with an intent to remain stagnant. तो दुनिया में जो भी कोई बिजनेस चालू करते हैं, कहीं भी करें, हिंदुस्तान में करें, हिंदुस्तान के बाहर करें, उनका सबसे बड़ा ड्राइवर होता है कि उनको बिजनेस को प्रॉफिटेबल तो करना ही करना है, एंड साथ साथ में उनको बिजनेस को ग्रो भी करना है. सो दीज आर दी प्रेरेक्विजिट्स फॉर एनी बिजनेस टू क्रिएट वैल्यू. यानी कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाते रहना है, और प्रॉफिट बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको साथ साथ ग्रो भी करते रहना है. सो नाउ what are the strategy that the businesses would deploy for value creation to happen? So the strategy that are deployed by all the businesses all over the world is fivefold. So there's a fivefold strategy that the businesses deploy all over the world, be it Buffett, be it Microsoft, be it Google, be it Tata's, be it Birla's, be it Ambani's, be it Mittals. All the businesses all over the world deploy five-point strategy so as to ensure the value creation happens in their business. What those 5 points are? Those 5 points, remember, are number one, 3 of the points relate to the profit and 2 of the points relate to the growth. So what are the strategic points, a strategy point for the purpose of making profit in the business? The first is sustained existing operations. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि मारुति गाड़ियाँ बनाती है, बजाज गाड़ियाँ बनाते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसी प्रोडक्ट्स देते हैं, इन्फोसिस आईटी में है. तो दुनिया भर की सारी कंपनियाँ अलग अलग बिजनेसेस में है. तो सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या होता है उनका? सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि सस्टेन्ड एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस. यानी कि मारुति ने पिछले साल में जितनी गाड़ियां बनाई उतनी गाड़ी तो उनको बनानी ही बनानी है, सो एज टू एंश्योर दैट दे क्रिएट वैल्यू एंड दे डोंट स्टॉप क्रिएटिंग वैल्यू. सो दैट इज नंबर वन, सस्टेन्ड एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस. क्या मतलब है कहने का मतलब ये है कि जो आप अब तक कर रहे हैं उतना तो आपको करना ही करना है सबसे पहले, एंड दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर स्ट्रेटेजी टू अचीव द पर्पस ऑफ अ बिजनेस, दैट इज टू क्रिएट वैल्यू. Number two, what you do is maximize revenue. Maximize revenue. Do whatever you can so as to maximize revenue of your business. Do whatever you can so as to maximize the top line of your business. नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करिए, नए मार्केट में जाइए, प्राइस मिक्स चेंज करिए, प्रोडक्ट्स मिक्स चेंज करिए, मार्केट मिक्स चेंज करिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, R&D का इस्तेमाल करिए, IT का इस्तेमाल करिए. Whatever you can do so as to ensure that you maximize your revenue. And the third strategy as part of third strategy so as to ensure the profitability that you have and to do even better is to minimize the cost. क्या मतलब है इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जिस भी तरीके से आप अपने बिजनेस की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कम करिए विदाउट हैविंग एनी हार्ट बर्न, राइट. सो रिमेंबर, कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय कम कर दो. कॉस्ट कटिंग का मतलब ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इस्तेमाल करो. कॉस्ट कटिंग का मतलब ये है ऑपरेटिंग लेवरेज का इस्तेमाल करो. कॉस्ट कटिंग का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको मेंटेन करते हुए अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और कैसे ज़्यादा लेवरेज किया जाए, और किस तरह से प्रोडक्टिविटी को, इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और उसको बढ़ा के हाउ टू मिनिमाइज योर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. एंड सो दीज आर दी 3 एलिमेंट्स which are focused on the profit, right? Profit. The remaining 2 elements relate to growth. So how do you achieve growth? So the growth you achieve, number 1 is by organic growth, and number 2 by inorganic growth. So let me repeat, which are the 5 elements for a business to achieve the value creation. The 5 elements for a business to achieve
achieve the value creation, number one is to ensure sustained existing operations. Number two is to maximize the top line, maximize the revenue, maximize the income of the business. Number three is to ensure that the cost is minimized to the extent possible. And element number four is grow organically. And element number five, grow inorganically. So I'm sure a question may be coming to your mind as to what is the meaning of growing organically and what is the meaning of growing inorganically. And of course, it is very simple. Growing organically का मतलब है to grow from within. That means when a business is growing by adding more capacities, diversification, expansion, modernization, technology upgradation, so when a business is growing from within, that is known as organic growth. और inorganic growth का मतलब है when a business is growing from outside, and that is the meaning of inorganic growth. यानी कि when you grow by taking over companies, acquiring companies, buying business units, and adding other companies to your organization, mergers, amalgamations, acquisitions, takeovers. So those are all examples of inorganic growth. So when we talk about the mergers and amalgamation, when we talk about the corporate restructuring, and that is where we are talking about primarily of the inorganic growth, and that is the focal aspects as far as our today's session is concerned. Now, before I go to the next topic, let me ask all of you, in case if you have any doubt or any question on this, we'll take that first and then we go to the next topic.